That is in order to commemorate such events that this Petadillal is performed. As two sections, Ambalapura and Alanga, we are witnessing the Petadillal, the transformed from Ambalapura Sankham. According to the historical perspective, it is also given in many books, even the Puranas, that the Petadillal was a part of spiritual discipline evolved by Ayyappa before embarking upon his war expedition against the despotic Udayanan to liberate Sabarimala temple from his hold. It was intended to raise a sense of all social and religious distinctions from the minds of the participants and to integrate them in the dynamic whole. All of them wore blue or black clothes and smeared their faces with charcoal and other colors. They danced in abandon in a state of forgetfulness of their individual distinctions while making a conscious effort to fix their attention on the divinity of Allah, for they consider it as a manifestation of supreme reality. While dancing and moving along with the procession, they utter the sound Swami Tindagatom, Ayyappa Tindagatom, which is chanted even today by the dancing couple. इसी तरह इस मंदिर के पास आज आप जो देख रहे हैं मकर विलक्कु जो होने वाला है, इसका मतलब ऐसा होता है कि इस दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। घनी पहाड़ियों के कंदमाला छोटी असाधारण चमक वाली एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति घटना को ही मकर ज्योति कहा जाता है। मकर संक्रांति और उत्तर फल्गुनी नक्षत्र के संयोग के दिन पंचमी तिथि और वृश्चिक लगने के समय ही अब आप जो देख रहे हैं वो है अम्बलपुरा पेटा। अब ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं वो है वावर मस्जिद। ये जो सबरीमला है, इसके इतिहास में एक बहुत बड़ी सामुदायिक मैत्री भी है। बरसों पहले यानी कि 5,000 साल पहले भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता निभाने के लिए, मिलावट रखने के लिए यहाँ एक सामुदायिक मैत्री का उदाहरण भी आता है। जैसे कि जब स्वामी अय्यप्पन वहाँ वावर जो भी हो, वहाँ के वो तो एक जंगल के लुटेरे थे जो हर आदमी पर हमला करते थे। एक बार स्वामी का इनके साथ टक्कर हुआ और टक्कर होने के बाद इनके आपस में ऐसी दोस्ती हो गई कि वावर स्वामी जो है उन्होंने उनके पूरे बुरे काम छोड़कर स्वामी के पास मिल गए और अय्यप्पा स्वामी वावर स्वामी दोनों मिलकर वहाँ राज करने लगे। उसके बाद भी जितने भी लोग हमला करने आए थे, जैसे कि उदयन आए थे एक बार हमला करने के लिए, तब भी इन दोनों ने मिलकर उनको हरा के भेज दिया था। और इस तरह अय्यप्पा स्वामी कहते थे कि वावर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना, बस मेरे ही पास रह रहोगे। उनके दाएं तरफ एक मस्जिद बना गई जो वावर मस्जिद, नैना मस्जिद कहा जाता है उसको। वो वावर मस्जिद स्क्रीन में देखे थे आप, वो वावर मस्जिद में भी ये अय्यप्पा ये जो मंदिर का फेस्टिवल जो है, ये जो त्यौहार चल रहा है, इसके अंदर ये मस्जिद के लोग भी शामिल होते हैं। तो भारत का ये एक ऊंचा इतिहास, एक भारत की एक ऊंची संस्कृति और हिंदू मुसलमान की जो मैत्री, सामुदायिक मैत्री, अनेकता में एकतापन, भारत का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो कहते हैं अंग्रेजी में, अनेकता में एकतापन, इसका एक उत्तम उदाहरण भी होता है इस सबरीमला के उत्सव में। और अब ये हाथी के ऊपर भगवान जो भगवान का स्तंभ यानी कि दर्शन करने के वाले जो हैं उसको लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर। ये आगे अंदर जा रहा है।
वक्त बीत रहा है और अब थोड़ी देर में मगर जोड़ी होने वाली है। इसके इंतज़ार के साथ पूरे भक्त लोग आके खड़े हुए हैं। वो ऐसा होता है कि थोड़ी देर के बाद जब अंधारा होगा तो अचानक से आसमान पर एक ज्योति दिखाई देगी, जिसको मगर ज्योति कहा जाता है। इसके इंतज़ार में पूरे भक्त लोग ऐसे खड़े हुए हैं। आज का इस साल का ये सबरीमला का जो उत्सव है, जो त्यौहार है, ख़त्म होने का आखिरी वक्त है और बड़ी ही बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं भक्त लोग दर्शन के लिए और मगर ज्योति के दर्शन के लिए। माना जाता है कि ज्योति का दर्शन करने के बाद इनकी ज़िंदगी में एक इतना उजाला आ जाता कि अगले आने वाले साल में, आने वाली ज़िंदगी में इनको हर काम करने के लिए एक स्पेशल ताकत, जो हिम्मत, जो दिलेरी और जो हिम्मत चाहिए, वो सब भगवान ने इनको अंदर दे देता है। इस मंदिर के पास घने जंगलों के अंदरों में बीच पहाड़ियों के ऊपर एक ज्योति अभी थोड़ी देर में दिखाई देने वाली है और इसके इंतज़ार में भक्त लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स वाले सब मिलकर बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ हिफाजत कर रहे हैं और पब्लिक भी, यानी कि जो भी भक्त लोग आए हैं, बहुत ही होशियारी के साथ पूरे प्रोटोकॉल को मानते हुए, कोविड प्रोटोकॉल को दिल में रखते हुए हिफाजती के साथ दर्शन करके जाने वाले हैं। पंद्रह नवंबर मंडल और 14 जनवरी के ये मगर विलक्कु सबरीमला का प्रमुख उत्सव, ये 3 महीने के करीबन का वक्त जो है मलयालम पंजाब के पहले 40 दिन के अंदर और विशुद्ध महायानी अप्रैल में इस मंदिर के पेड़ वाले जाते हैं। We are witnessing the different areas to which the procession carrying the ornaments, the Tiruvabharanam, which is to be adorned on the Lord, visiting. What we are witnessing here is the different stages of procession undertaken from the old Pantalam Palace en route to Sannidhanam. These are the ornaments to be adorned on the mountain Lord of India, Lord Ayyappa. Several devotees carry the ornaments on their shoulders and walk through the hills and the roads barefooted, carrying them till the Sannidhanam, where the priest adorns these ornaments onto the Lord, the idol of the Lord. En route to Sannidhanam from the old Pantalam Palace, this procession visits several temples, and one among such visit has been shown on your screen right now. Along the path of this procession, where this Tiruvabharanam is carried by barefooted devotees, lakhs of people assembled on both sides of the road to have a glimpse of the same. This is a much decorated event which goes on, which continues without losing its fervor, its ecstasy and devotion for centuries from now. Also, it's surprising to see that even the current situation of the rapid spreading COVID infection has not deterred the devotees from attending these events and making it colorful, devotionful and successful.
these are the ornaments being carried. These are the scenes of the ornaments being carried. These are recorded events. These are the ornaments being carried, accompanied by the security forces of the Kerala police. Every arrangements have made on the road to see that everything falls in place at the right time. The visits of Tiruvabharanam to different temples is in fact a respite for those who are carrying them for kilometers and kilometers. जो आभरणों की घोष यात्रा जो रास्ते में जा रही है, तो दोनों तरफ लोग इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं उसका दर्शन करने के लिए और आदर करने के लिए। कई लोग फूलों की माला पहनाकर भक्ति के साथ उन आभरणों की, उन गहनों की इज्जत करते हैं और उसके बाद जब वो आभरण सन्निधान तक पहुंच जाते हैं तो बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी भक्ति के साथ उसको लेकर रखने के बाद वहाँ एक पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद सावधान से इस पूरे सोने के गहनों को अंदर लेके जाकर भगवान पर, अभी आप जो देख रहे हैं वो है सन्निधान के उधर पूरी तरह से इंतज़ार हो रहा है मगर ज्योति के लिए। अभी तो सूरज ढलने वाली है, अंधारा हो रहा है, थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा, एकदम अंधारा हो जाएगा। तो अचानक से एक चमत्कार की तरह मगर ज्योति आपको दिखाई देगा। इसके लिए पूरे इंतज़ार के साथ लोग खड़े हुए हैं। आपको सिक्योरिटी वालों का जो हवाई जहाज़ जो छोटी है वो भी आसमान पे घूम रही है। हर तरह से पुलिस और पब्लिक दोनों मिलजुल कर अच्छी तरह से पूरा प्रोटोकॉल भी निभाते हुए हिफाजती के साथ ये साल का भी सबरीमाला का ये जो त्यौहार है इसको बड़ी शान से और बड़ी भक्ति के साथ, इज़्ज़त के साथ मना रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मगर ज्योति के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से 3-4 दिन के बाद, आज के बाद करीबन 4 दिन के बाद वहाँ के दरवाजे बंद हो जाएंगे और बस फिर अगले साल ही दरवाज़ा खोला जाएगा पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, दर्शन के लिए। തിരുവാഭരണ ദർശനവും മറ്റും നടക്കുന്ന ഇന്ന് ദൂരദർശൻ്റെ ലൈവ് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതലാണ് ഇത്. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഭക്തജനങ്ങൾക്കും
തങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ദർശനവും അനുഗ്രഹവും ഇതിലൂടെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. What is special about Sabarimala is one thing, that is the forest route. Pilgrims going through the forest route are comparatively less during the first phase of the pilgrim season, that is during the Mandala Puja season. But during the Maha Sankrama, the Maha Makar Sankrama, the phase begins from the 1st January. A large number of pilgrims go through this route. Till about 2 decades ago, the pilgrims taking the forest route used to step directly into the forest immediately after Edumili. But now, they are supposed to walk at least 4 kilometers to the public roads before entering the forest. On the way, there is a broad stream called Peruntodu, once considered the boundary that separated the inhabited land from the forest. But now the villages extend from here up to a place called Irumponikara, that is 3 kilometers eastward. At Irumponikara, there are 3 temples dedicated to Lord Shiva, one to Lord Subramanya and Goddess Balabhadra Devi. Immediately after this place, that is Irumponikara, the pilgrims enter dense tropical forest. Many prefer to walk barefoot through the holy mountain ridges considered to be the Pungavanam, the blooming grove of Lord Ayyappa. After a walk of about 3 kilometers, crossing some of the jungle forest streams, the pilgrims reaches a place of rest known as Arashamudi Kotta, where it is believed that Ayyappa and his soldiers took rest for some time. It is a place of worship of the guardian deities of the forest, and there is a small shrine for them. Then the pilgrims proceed ahead through a forest path that lies along the side of the river called Paratur, the crystal clear water of which frisked and roll out about amidst the rocks. It's an ideal place for a refreshing cool bath. The auspicious phenomenon of appearance of Krishna Paranda occurs on some of the special occasions, like just before the procession carrying Tiruvabharanam, the special ornaments of the Lord, which starts from Pantalam Palace, and also when the procession reaches Sharamkutiyal, a sacred spot near Sabarimala temple. These occurrences, as if programmed, take place every year, can be regarded as nature's clues reminding man of the all-pervading reality behind all phenomena. Such events serve to remind him of the greater dimensions in nature beyond what he knows in his ordinary conditioned state. However, more than such super-rational incidents, it is very intimacy with the inner divinity which the pilgrimage provides that draws millions to Sabarimala. During the pilgrimage season, Erumili witnesses memorable scenes of abounding devotion, color and festivity. Thousands of pilgrims on reaching here either proceed to Pampa by vehicles or take to the forest route by foot to reach there. In Erumili, near Valiyampalam, there is a camp of Akila Bharat Ayyappa Seva Sangham, a well-known voluntary organization which renders considerable service to pilgrims. A place associated Arutha was on the bank of a river known by the same name. About 2.5 kilometers from Kalaketi is another major resting place of pilgrims. From Kalaketi to Arutha, it is a mid-forest village scene, and between the two places there is a tarred road instead of the usual rugged forest path. The river Arutha is a tributary of river Pampa. Many of the pilgrims camp at this place during night, and there are a number of temporary sheds that provide accommodation. In Arutha, there is a temple complex of various deities. A special ritualistic ceremony performed here is Ari Puja, which is a prayerful walking around a huge pile of fire chanting aloud Swami Sharanamayappa.
During the Makara Sankrama season, especially after the 1st January, Ayurveda and surrounding areas become a scene of constant movement of millions of pilgrims. The holy bath in the river Ayurveda is a part of the pilgrimage. While making a dip, the pilgrim, as a ritualistic custom, takes a pebble from the river which he later drops on reaching the place called Kalladikul, which literally means the hill where the stone is dropped. Everyone are eagerly waiting for the makara vilakku to appear in the skies. We're witnessing the scene inside the Sannidhanam. The cameramen of Doordarshan and the associated officers are working tirelessly to bring you these wonderful, these blissful visual records from Sannidhanam and Pamba. ये हिंदुस्तान की पुरानी संस्कृति का एक ऊंचा प्रतीक है। इधर सामुदायिक मैत्री और एकतापन का 5000 साल पुराना ये उदाहरण आज भी भारत के संस्कृति के ऊपर इज्जत के साथ बहुत बड़ी शान के साथ नाम लिया जाता है। अय्यप्पा स्वामी मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, फिर भी सिर्फ हिंदुओं ही नहीं, मुसलमान हो या ईसाई हो, जो भी हो, सब बड़ी भक्ति के साथ साल में एक बार इधर आकर दर्शन लेके जाते हैं। ये सबरीमला शैव और वैष्णव के बीच एक अद्भुत कड़ी भी है। पश्चिम घाटी में पहाड़ियों के श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थित ये अंबल, ये जो अय्यप्पा स्वामी की जो मंदिर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दुर्घटनाओं से पार करना पड़ता है। जंगल के घड़े घड़े, बहुत गहने रास्ते और कई तरह के जानवरों के बीच में से। आजकल तो सुविधाएं बहुत बढ़ गई, जाना आना तो आसान हो गया, फिर भी जो लोग पूरी कोशिश करके, पूरी हिम्मत के साथ करते हैं, तो वो एक 40 दिन का व्रत अनुष्ठ करके नंगे पैर पैदल जाते हैं, अपने घर से पैदल निकलकर वहाँ तक अय्यप्पा स्वामी के पास 18वीं सीढ़ी के ऊपर तक जाकर स्वामी का दर्शन करके उनका We are witnessing the preparations for the much decorated Pamba Sadhya, which happens every year in the banks of river Pamba. Near the temple of Lord Ganesh. It's an offering to the Lord. Along with the Lord, there is a feast where millions of devotees
attend. We are witnessing the scenes from there. This food, they have this food with much devotion and pleasure. The devotees see this as an instance of blessing. ये पंबा नदी के तट पर आखिर में एक समूह भोजन मनाया जाता है, इसको पंबा सद्या कहा जाता है। वो समूह भोजन के बाद सब लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं मगर संक्रांति के लिए। वो जो मगर ज्योति जो आसमान में दिखाई देगी उसके लिए बड़ी इंतज़ार के साथ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं मंदिर के पास बड़ी बेचैनी के साथ भक्त लोग पूरी प्रतीक्षा लेके खड़े हुए हैं। जब भक्त लोग वापस जाएंगे तो वो यहाँ से प्रसाद भी लेके जाएंगे। उनके लिए प्रसाद जो है उसको अरवाना कहा जाता है। गाय के दूध से निकाला हुआ शुद्ध गाय का घी से बनाया हुआ इस अरवाना यानी कि खीर जो है वो प्रसाद के रूप में वहाँ के पूजा पाठ के बाद जो भक्तों के लिए आजकल गवर्नमेंट उसको पैक करके बड़ी हिफाजत के साथ देवस्थान वाले दे रहे हैं। उसको भी लेके जाएंगे प्रसाद के साथ अपने अपने घर को। उसके लिए बड़ी इंतज़ार से भक्त लोग खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर में मगर ज्योति दिखाई देगी। आप जो देखते हैं पर्दे पर सोने से गहने बनाए हुए पूरे भगवान के मूर्तियां हैं और From the British records, we can have some interesting facts. That is, in 1812, the British lieutenants Ward and Connor says on January 12, about 10 to 15,000 people from the most remote parts of India visited Sabarimala. I am referring to the memoir of the Survey of Travancore and Cochin States, page number 136. It is very pertinent to note that when India's population was in millions, in 1812, when steam engine, car, train was not even thought of, people came by walking from the remote parts of India. The usage is interesting as it is not Travancore or Kerala or the Madras Presidency or South India, but the usage in the memoir was India. Many of the renowned film actors and celebrities are here. The procession from the Pandalam Palace is about to reach Sannidhanam.
which has almost reached Sannidhanam, and it is carrying all those blessed ornaments of Lord Ayyappa, and it is about to step into the 18 holy footsteps. Now that this is a most important and auspicious moment for all the devotees waiting for this to happen, that the procession, the Tiruvabharanam procession, the team is slowly arriving at the scene at Sannidhanam. The preparations are being largely made. Everyone is eagerly waiting for the Makara Jyoti to happen, which is also called as the makara vilakku. Makara Jyoti is a star that rises in the horizon, which is a Rudra Nakshatram, or the Westerners call it as sideways. In Latin, sideways means Jyoti, that is a flickering light. Makara vilakku, on the other hand, is a symbolic Deeparatana in a place called Ponnambalameda, where Malayarayas, the tribal Vanavasis, Adivasis, used to do Deeparatana. Now the tradition is continued. There is a striking difference between Makara Jyoti and Makara. Where Makara Jyoti is a star that rises on the horizon. The Westerners call it Sirius. In Latin, Sirius means Jyoti, or a flickering light. Makara vilakku, on the other hand, is a symbolic Deeparatana in a place called Ponnambalameda, where Malayaraya tribal Vanavasis, Adivasis used to do Deeparatana, and now the tradition is handed over and continued. The ornaments of Lord Ayyappa is about to reach the 18 feet, about to scale the 18 feet, and it is in the vicinity of the holy steps. You can see the policemen also accompanying the same. They are also garlanded. They also take part in this devotional scene. They are also part and parcel of all these happenings. We can see men carrying the ornaments to be adorned on the Lord. They're being held by people surrounding them. Remember, they've been carrying this for hundreds of kilometers, right from the old Pantalam Palace, barefooted on the top of their head. The final folding of events is happening here, which needs no description as well. A moment of silence for those blissful devotees to enjoy and devote themselves to this colorful, wonderful, and devotionful happenings.
Procession, people paving the way, and the procession is moving on. The people carrying the ornaments have been guided to the temple. What a unique procession. This is happening every year. Millions of devotees attend. They were patiently waiting to get a glimpse of the same, and if possible to have a touch. The bolts which they consider are sacred, and bolts which carries the sacred ornament, they regard it as blissful. अब जो देख रहे हैं अपने पर्दे पर, पंदलम राजा के महल से जो भगवान के आभूषण हैं, सोने के जो गहने हैं, उसको बड़ी भक्ति के साथ सिर पर रखकर लेके ला रहे हैं। वो जो घोष यात्रा मंदिर के अंदर आ रही है तो बड़ी उत्साह के साथ भक्त लोग उसका आदर के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद पूजा पाठ के बाद उस गहनों को भगवान की मूर्ति पर पहनाया जाएगा और उसके बाद पूरी तरह से आभूषणों से भरे हुए भगवान का दर्शन भक्त लोगों को लिए दिया जाएगा। उस दर्शन के लिए बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं और इस दर्शन के बाद मगर ज्योति का भी दर्शन करने के बाद ही भक्त लोग वापस जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सिर पर रखकर गहनों को, सोने के गहनों को जो भगवान के मूर्ति के ऊपर सजाना है, चढ़ाना है, इसको लेके ला रहे हैं। बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी हिफाजती के साथ गहनों को ले रहे हैं। अंदर पुजारी के पास गहनों को सुंदाख अंदर दे गए। अभी पुजारी पूछ पाठ करने के बाद भगवान को पूरे सोने के गहनों पिनान को आघोषित करने के बाद दर्शन देंगे।
കിട്ടുവാ അറിയണ കെട്ടി വന്നാൽ കിട്ടുമോ കെട്ടി വന്നാൽ കിട്ടുമോ അടുത്ത കെട്ടിയായിരിക്കും What we witness here is the procession that has started from the old Pantalam Palace has reached the part of the Mountain Lord of India, that it has reached the Sannidhanam, and the ornaments are being adorned on the Lord. Everyone is eagerly waiting, every devotees are eagerly waiting for the moment when the temple doors are opened to have a glimpse of the same that is about to happen right here.
witnessing Makara, which culminates a glorious period of pilgrimage that bestows spiritual reinforcement to millions in solemnizing the occasion of a holy pit of Kemper is lighted from the height. A mountain range about 15 kilometers away facing the shrine. The millions of pilgrims, we are currently witnessing Makara, and millions of pilgrims are getting immersed themselves in the spiritual experience for the second time, seeing the sacred Jyoti, and that reminds them of the eternal light of spiritual presence within, symbolized by the divinity form of Lord Ayyappa, waiting for the third time it to appear. Lord Ayyappa, who illuminates the millions of galaxies, a source behind the formation, maintenance and dissolution of the universe and the evolution of life and its pilgrimage to spiritual freedom. That has happened. अंत में मगर ज्योति दिखाई दिया और भक्त ने पूरे आवेश के साथ, पूरी भक्ति के साथ मगर ज्योति का दर्शन किया। उसके साथ मगर ज्योति से उनको जो आशीर्वाद भगवान का मिला है, उसको लेकर वो जाने वाले हैं। अब पूरे 1 साल तक उनके अंदर वो उम्मीद के साथ, वो उमंग के साथ अगले साल फिर मिलने की उम्मीद लेकर वो जा रहे हैं वापस। अभी मगर ज्योति के दर्शन करने के बाद लोग वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बस यही घटना के लिए, इसी वक्त के लिए बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे थे भक्त लोग, और उनको दर्शन मिल गया मगर ज्योति का और भगवान का, स्वामी अय्यप्पा का। 18वीं सोने की सीढ़ियाँ के ऊपर चढ़कर दर्शन करके, उनके पाद का स्पर्शन करके, आशीर्वाद लेकर, मगर ज्योति का दर्शन करके, मगर ज्योति का आशीर्वाद लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ पुजारी के पास से बड़ी कोशिश के साथ वो प्रसाद भी ले रहे हैं। प्रसाद को बड़ी हिफाजत से वो लेके जाएंगे। उसके बाद अरवाना पायसम बोलकर वो जो प्रसाद है, जो शुद्ध घी में बनाया जाता है, वो प्रसाद को भी लेके जाएंगे अपने साथ, और पूरे 1 साल वो इंतज़ार करेंगे आने के लिए फिर से इस मगर ज्योति के अय्यप्पा स्वामी के दर्शन के लिए।